Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, 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 Jai Om Vishnu Paramanandi Divine Grace Bhakti Maharaj ISKCON be founder charity. I'm like not charged. ISKCON Kota, Go Premanande, all glories, all glories, all glories divine to the Sri Guru and Gopal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devin Saraswatim Vyasam Ojaya Muktirayat 2-9-3-4 Krishna Sudamo Bhagate Dhamigana Pistaha Kalanata Dashamesha Rana Purvata. Hey, so we are on the 4 nutshell verses of the Bhagavatam. तो ये चतुश्लोकी भागवतम है जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम के.
it's considered by our acharyas, our teachers, that all the Bhagavatam rests on these 4 verses. तो हमारे आचार्य गण कहते हैं कि पूरा जो भागवतम है इन 4 श्लोकों के आधार पे. And Prabhupada explains all of this in very lengthy, extensive, wonderful. लंबे तात्पर्य लिखते हैं इन 4 श्लोकों में. We only have a short amount of time. क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada's spiritual master. तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर spoke on the first verse, the invocation actually of Bhagavatam, for 30 days. तो जो पहला श्लोक है भागवतम का उन्होंने 30 दिन तक उस पे प्रवचन दिए. But then he said, because there's 18,000 slokas in Bhagavatam, we should move on. तो फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि 18,000 श्लोक है भागवतम में तो हम आगे बढ़ेंगे. We only have a few minutes. हमारे पास कुछ ही मिनट है. So we'll read the verse, we'll read the translation, and then we'll read just the first paragraph of the purport. तो श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद करेंगे और केवल फर्स्ट जो पैराग्राफ है तात्पर्य का वो पढ़ेंगे. At least I don't know how many pages it's at least 5 pages, maybe 4 pages, 6 pages. But I don't want to just rush through that. Doesn't do it justice. तो कम से कम 4-5 पेजेस है तात्पर्य के. तो महाराज बहुत जल्दी नहीं जाना चाहते, बहुत आराम से जाना चाहते हैं. So what do we do about chanting the verse? Because we don't have it written anywhere, which is fine. It's understandable. Do we all do it on our device? Yes. Do the ladies also have polio on their phone? No. सबके पास है श्लोक, माताओं के पास. ग्रुप पे डाल. They have shared in the group. You have polio. I could ask you to share polio on her. तो माताओं के पास है. No. Yes. नहीं. Yes, the polio. No, the polio. But yes. है आपके पास वो श्लोक. So how about one of the gentlemen lend their phone to the ladies? माताओं को फोन दे दीजिए आपको. भेज दिया है ग्रुप में. It is 2:34. Punit forum. So when you find it, give it to the ladies. माताओं को फोन दे दीजिए. एक दो फोन दे दीजिए. They're looking on their phone, so they must have it. Yeah. The boys have. No, but she's looking on her phone. So you have folio on your phone? Why did you say no? Just to bewilder me? It doesn't take much. So you have polio. Yes. So she has polio. Okay. So okay, everybody's got it. They can look at the verse. All right. You also have the verse? Or you have psychic powers? Okay. Now get that sorted out. Rite Ritam Yat Yata Vieta Na Vieta Chatmani Atmano Maya Yadavaso Yada Kama Vitam Yat Pratiyeta Vite Artam Yat Pratiyeta Na Pratiyeta Chatmani Na Pratiyeta Chatmani Sadvidyadatmano Maya Sadvidyadatmano Maya Tapaso Yata Tamaha Tapaso Yata Tamaha Chiritam Yat Prati Hey Pratiratam Yat Pratiyeta Pratiratam Yat Pratiyeta Na Pratiyeta Chatmani Na Pratiyeta Chatmani Tad Vidyadatmano Maya Tad Vidyadatmano Maya Tapaso Yata Tama Tapaso Yata Tama Pratiratam Yat Pratiyeta Pratiratam Yat Na Pratiyeta Chatmani Na Pratiyeta Chatmani Tad Vidyadatmano Maya Tad Vidyadatmano Maya Tapaso Yata
नमः। Jaya. इते अर्थम यत् प्रतीयेत इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मानो यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः। इते अर्थम यत् प्रतीयेत इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः इते अर्थम यत् प्रतीयेत इति अर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया तद्विद्यादात्मनो माया भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः। Please. माता बोलिए Give it a try. इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। Anyone else? Vaishnavi? न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। इति शब्दार्थ अनुवाद जय बिना अर्थम बोल मूल्य यत् जो जो प्रतीयेत प्रतीयेत प्रतीत होता है प्रतीत होता है नहीं नहीं प्रतीयेत प्रतीयेत प्रतीत होता है प्रतीत होता है तथा आत्मनि आत्मनि मेरे संबंध में मेरे संबंध में वह विद्या विद्या तुम्हें जानना चाहिए तुम्हें जानना चाहिए। आत्मनः मेरा मेरा माया माया मायावी शक्ति मायावी शक्ति यथा यथा जैसे जैसे आभासः प्रतिदिन प्रतिदिन यथा यथा सब सब नमः नमः अंधकार अंधकार अनुवाद। हे ब्रह्मा जो कुछ भी किसी भी मूल्य का प्रतीत होता है अगर वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी मायावी ऊर्जा के रूप में जानो। वह प्रतिबिंब जो अंधकार में प्रतीत होता है। पिछले श्लोक में यहाँ पहले ही निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के किसी भी चरण में उसका प्रकट होना, उसका पोषण, उसका विकास, उसकी विभिन्न ऊर्जाओं की परस्पर क्रिया, उसका ह्रास और उसका लुप्त होना सभी का व्यक्तित्व के अस्तित्व के साथ बुनियादी संबंध है देवत्व का। और इस तरह जब भी भगवान के साथ इस प्रमुख संबंध की स्मृति होती है और जबकि चीजों को भगवान से संबंधित ये बिना वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाता है तो वह धारणा भगवान की मायावी ऊर्जा का उत्पाद कहलाती है। क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता, वहां जानना चाहिए कि मायावी ऊर्जा भी भगवान की एक ऊर्जा है। भगवान के साथ संबंध में सब कुछ जोड़ना का सही निष्कर्ष योग माया कहलाता है या संग की ऊर्जा। और किसी वस्तु को भगवान के साथ उसके संबंध से अलग करने की गलत धारणा को भगवान की दैवी माया या महामाया कहा जाता है। दोनों मायाओं का भी भगवान के साथ संबंध है
क्योंकि उनसे संबंधित हुए बिना कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। अतः भगवान से संबंध विच्छेद करने की गलत धारणा मिथ्या नहीं अपितु भ्रांतिपूर्ण है। सब भागवतम चल रहे हैं। The absolute truth is difficult to discern. परम सत्य को जानना बहुत मुश्किल है। If I'm at the base of a hill कि मैं पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ and I'm looking up, और ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, all I can see are the bushes, trees. I can only see what's right in front of me. जो भी कुछ देख सका वो मेरे सामने ही होता है, जो वृक्ष होते हैं, पत्ते ये सब होता है। If I'm on the top of the hill looking down, अगर ऊपर से देखता हूँ मैं, then I can see the whole path. तो सब कुछ देख सकते हैं, रास्ते ये सब देख सकते हैं। I can tell the person lost at the bottom of the hill. जो नीचे खड़े हैं, जो खो गए हैं, उनको कह सकता हूँ, Oh, go to the left, or go to the right. Watch out for this, come this way, come that. लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, इस तरह चलो तुम। So we need to hear Bhagavatam from a self-realized soul. तो भागवतम को एक आत्मा जो जिन्होंने आत्मा साक्षात्कार किया उनसे हमको सुनना है। Krishna says the same thing in Bhagavad Gita. यही कहते हैं कृष्ण भगवद गीता में। They misunderstand in so many ways. और लोग उसको गलत मानते हैं कई तरीके से। Oh, phone's off. फोन को बंद करना है, Yeah, phone off. फोन ऑफ कीजिए। Just off. It's so simple. बहुत सरल है, बस बटन दबाए ऑफ कीजिए। It takes one finger, एक ही उंगली लगेगा आपको, क्लिक करना है और बंद करना and है। you'll be peaceful. 45 minutes. तो 45 मिनट के लिए शांति मिलेगी आपको। Just bad news. Just bad news and बस gossip. बुरी खबर और जल जाएगा उसको। So how to say it simply? I'll give you an example. एक उदाहरण देखें महाराज। If I have an oriental rug, you know, a Persian rug, Indian rug, nice woven rug, जैसे कपड़े हैं हमारे पास तो इंडियन स्टाइल के, ट्रेडिशनल स्टाइल के, you know, and they have the loom, तो उसका एक बॉर्डर होता है, and there's the strings that go this way and strings that go this way. तो धागे इस तरह जाते हैं और उस तरह। They're called the warp and the woof in English, and in Sanskrit it's protam and otam. तो संस्कृत में उत्तम और उत्तम होता है। Now, the perfection of one of those rugs, तो उस कपड़े का जो पूर्णता है, you see all the pattern. ये सभी जो पैटर्न होता है उसमें हम देख सकते हैं उसमें। You don't see the threads. पर धागे को हम दिखाई नहीं देता है वो धागा। You know, have you ever looked at the back of an oriental rug, of a woven rug, carpet? तो ऐसे कारपेट जो है जैसे इसके पीछे कभी देखा आपने? You see those white threads? तो हम देखा है कि सफेद रंग के धागे होते हैं। What happens if you pull out one of those white threads? What happens to the rug? तो अगर एक धागे को खींचते हैं तो उस कपड़े का क्या होता है? You don't even see it looking at it. आप देखो, आपको दिखाई भी नहीं देगा वो धागा। But you pull out that thread, what happens? और धागे को खींचोगे तो क्या होता है? Kids don't try this at home. So बताइए कोई, help me out. What happens? बताइए What happens to the rug? क्या होता है इस कपड़े का? It gets spoiled. The whole thing unravels. All you have is a pile of yarn. तो सब कुछ धागे हो जाते हैं। What is it? I can remember the last Shute Maniganaiva. What is it? Give me the first word. I'll get it. Matapratanam Nanyat Kinchidasti Nananjaya. Mai Savamidam Protam Sutre Maniganaiva. तो ये श्लोक है भगवद गीता से। So Krishna says in the Gita that all things rest on me like pearls on a thread. तो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जो भी है इस संसार में
वो ऐसे के जैसे धागे में मोती हम डालते हैं। So ladies, तो माताएं, suppose your husband says, you're such a nice wife. तो आपके पति कहते हैं आप बहुत अच्छी पत्नी हो, You're serving Krishna so nicely. आप कृष्ण की सेवा बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, You're helping me together. We're partners serving Krishna. तो आप उनके मदद कर रहे हैं ताकि कृष्ण की सेवा करें। So I bought you a gift. तो उन्होंने आपके लिए एक हार लाया, I bought you a pearl necklace. तो उन्होंने मोती का माला लाया आपके लिए। Now I know you're all very. तो महाराज जानते कि आप बहुत विरक्त हो, It's a nice gift from your और husband. एक अच्छा उपहार है कि पति ने दिया आपको। And so you're very nice. You're very happy. You open up the box. तो आप बहुत खुश हो, तो डिब्बे को आपने खोला, And what's there is a long string with one pearl on it. तो उसमें आप देखते हो कि एक बहुत सा लंबा धागा है और उसमें एक ही मोती है, All string, one pearl. केवल धागा है और एक ही मोती है। So you say, Jai Prabhu, thank you very much. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। And in your mind, think, what a cheapskate. और आप सोचेंगे, What is this? आप सोचेंगे दिमाग में कितना सस्ता चीज दिया मेरे को, क्या दिया मेरे को। The beauty of this thing, of a necklace, तो एक माला का जो of सुंदरता है, a pearl एक necklace, मोती का माला का सुंदरता ये है is you don't even see the thread. कि आप उस धागे को धागे दिखाई भी नहीं देगा, इतने सारे मोती होते हैं उसमें। The beauty of the thing is that you don't see the thread. कि सुंदरता, वो उस चीज का जो सुंदरता है कि धागा दिखाई नहीं देता, ये सुंदरता। But if that thread breaks, what happens? पर अगर वो धागा टूट जाता है तो क्या होता है? Everything's gone. Everything's scattered. The necklace is finished. सब कुछ बिखर जाता है, तो माला बिखर जाता है। So just because we can't see it doesn't mean it's not there. कि क्योंकि हम धागे को नहीं देख रहे, उसका ये मतलब नहीं कि धागा ही नहीं है। Krishna says, all things rest on me like pearls on a thread. तो कृष्णा कहते हैं सब कुछ मेरे पे आश्रित है, जैसे मोती के माला में मोती जो है धागे में। Krishna is the proton and the photon of all existence. He's woven as the super soul inside all things. तो कृष्णा जो है उत्तम है पूरे सृष्टि का, कि जैसे कपड़े में धागा होता है, तो ऐसे ही कृष्ण ने सबको परमात्मा के रूप में सम्मिलित किया, उन्होंने रखा उन्होंने। I think this is a science and technology school here, isn't it? National technology. तो यहाँ नेशनल टेक्नोलॉजी का स्कूल है। If you and so we have a don't we have a physics professor here? Somebody was our physics teacher. Your physics. फिजिक्स टीचर जो है, I'm not going to embarrass you. तो आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे महाराज। But I've asked physics professors, तो महाराज ने कुछ फिजिक्स के टीचर्स को पूछा उन्होंने what is gravity? कि ग्रेविटी क्या होता है? What is gravity? ग्रेविटी क्या होता है? It's one of the four forces that hold the whole exists together. तो चार जो You know, force weak होते हैं, force, strong force, gravity. You know, you get that. That's what pull, and like the other one जो पूरे holds संसार everything को together. स्थिर रखते हैं, साथ में रहते हैं, रखता है पूरे संसार को। So you ask a professor, what is gravity? तो एक प्रोफेसर से पूछा महाराज ने कि ग्रेविटी क्या होता है? Oh, he says it's caused by mass. तो प्रोफेसर ने कहा कि मास से जो वजन जो है उससे ना बनता है वो, More mass, more gravity. जितना वजन होता है उतना ही ग्रेविटी होता है। Okay. Well, what gives mass gravity? तो मास को या वजन को क्या ग्रेविटी कैसे मिलता है उनको? Oh, there's gravitons. तो उन्होंने कहा कि ना ग्रेविटॉन्स होते हैं। Well, what's a graviton? तो ग्रेविटॉन क्या होता है? Oh, it's a particle infused with gravity. तो एक पार्टिकल है जिसमें ग्रेविटी होता है। Have I given you an answer? तो क्या ये जवाब है? Have I answered your question? क्या सवाल का जवाब मिला? Not at all. नहीं। I've defined the thing in its own thing. तो It's circular तो reasoning. उस चीज को उसी चीज के ना परिभाषा बस घूमते रहेगा ना। Ask him what's electricity. आप पूछे उनसे कि विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? Well, you got electrons, protons, neutrons, electrically charged particles. तो वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, जिसमें ना इलेक्ट्रिक वो होता है, चार्ज होता है। Have I defined electricity by telling you it's an electrically charged particle? तो क्या ये परिभाषा है कि जब में हमने कहा कि वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है वो चीज? I've explained the mechanism. मैकेनिज्म ना जो प्रोसेस होता है उसको डिफाइन किया, परिभाषा दिया। I've explained the how, कि कैसे होता है ये बताया गया, but I haven't explained the why. पर क्यों होता है ये नहीं बताया। The fact of the matter is that Krishna is the sustainer of all existence. तो सत्य यही है कि कृष्ण ही आश्रय है पूरे संसार के, वही पालन करते हैं।
Krishna expands into Balaram, Balaram expands into Seshanag, Seshanag expands it, and in this way from Seshanag, from Balaram, Krishna comes gravity. It's So- holding all things. कृष्ण बलराम के रूप में विस्तारित होते हैं, फिर उनका विस्तार जो है अनंत शेष होता है, जो जिनका विस्तार ग्रेविटी होता है, जो पूरे संसार को पालन करते रखते हैं। So this verse in the Bhagavatam तो ये श्लोक जो भागवतम में है, is explaining that when we see something separate from Krishna, that is illusion. तो वर्णन ये किया जा रहा है इस श्लोक में कि जब किसी चीज को अलग देखते हैं कृष्ण से, तो ये क्या होता है, ये माया कहलाता है। If we think we have some strength, अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ शक्ति है, Krishna says in the Gita, I'm the strength of the strong. तो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जो शक्तिमान में जो शक्ति है वो मैं हूँ। Krishna says, I'm the original fragrance of the earth. तो कृष्ण कहते हैं कि वो आदि सुगंध है जमीन का, पृथ्वी का। He says, I am the light of the sun and the moon. तो कृष्ण कहते हैं मैं रोशनी हूँ सूर्य और चंद्र का। You read that section, Opulence of the Absolute, read that section in Bhagavad Gita, तो ये जो That chapter. 10वां 10th chapter. जो 10वां अध्याय है, यहाँ पर ये उसमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया है उसमें। And you get a sense how Krishna is sustaining everything. तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे भगवान सब कुछ का पालन कर रहे हैं। This is not sentiment, this is fact. ये भावुकता नहीं है, ये सत्य है। Prabhupada said, you think you're sitting on the floor? प्रभुपाद जी कहते हैं आप सोचते हैं कि आप फर्श पे बैठे हो। आप He said, I'm sitting in the hand of Krishna. प्रभुपाद कहते हैं मैं कृष्ण के हाथ पे बैठा हूँ। So why does this matter? तो ये क्यों मायने रखते हैं? We place what we think is true, we put value on. तो जो हम सोचते हैं कि ये चीज सत्य है, तो उसको ही मोड़ देते हैं। And what we put value on, we have goals to achieve. तो जिसको मूल्यवान समझते हैं, तो उसका कुछ लक्ष्य होता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। All human endeavor is based on goals, and goals are created by values. तो जो भी मनुष्य का जो लक्ष्य होता है, वो सब तो मनुष्य जीवन का जो है, जो भी करते हैं, वो लक्ष्य पे आधार होता है, और जो लक्ष्य है वो मूल कितना मूल्यवान है, वो लक्ष्य उसके आधारित होता है। If I think I'm this body, अगर हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, then my goal is to please my senses. तो मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने इंद्रियों को संतुष्ट और प्रसन्न करूंगा। And my whole life, I'm working to get this, to get that, all to please the senses, to please my body. Because I think I'm this body. पूरा जीवन इसमें ही बीत जाता है कि इंद्रियों को तृप्त करना, उसको खुश करना, ये प्राप्त करना, वो करना। तो पूरा जीवन इसमें ही बीत जाता है कि शरीर को संतुष्ट करना। If I think I'm this mind, अगर मैं सोचता कि मैं ये मन हूँ, I have so many concepts. तो कई धारणाएं होती हैं। I want to be this, I want to be that, I want to be respected, I want honor, so I've got to work hard, I got to become political or a movie star, I got to become something. तो मैं ये सोचा मुझे ये बनना है, वो बनना है, सम्मान कमाना है, या कि पॉलिटिशियन बनूंगा या मूवी स्टार बनूंगा। Go by a barber shop, you know, आप where they cut the hair, एक नाई के पास जाइए आप, and look at all the pictures in the window. जो भी ना फोटो है खिड़की पे आप देखिए उसको, Style my hair this way, ऐसे बाल बनाते I हैं, can style it this way, उस तरफ बनाते हैं। I can buzz it, I can do so many things, I can dye it purple. We saw some kid with purple hair. That's all driven by false ego, because I have a certain sense of identification with the mind and with the ego, and I want to manifest it. तो ये अहंकार पे आधारित होते हैं, क्योंकि हमें अहंकार है, तो उस अहंकार को उसको अनुभव करने के लिए तो ये सब चीजें हम करते हैं। We're free from all हर बार that. No problem. ये सब नहीं करते हैं, कोई समस्या नहीं। So, I mean, it's not that everyone has to shave their head. That's ऐसा not नहीं कि ये कह रहे कि सबको मुंडन करना है। But what's being described in this verse तो इस श्लोक में जो वर्णन किया जा रहा है, is that everything comes from Krishna, everything belongs to Krishna. सब कुछ कृष्ण से आता है, सब कुछ कृष्ण के ही है। You know, Prabhupada says, suppose I walk into the Bank of America. तो प्रभुपाद कहते हैं मान लीजिए कि वो बैंक ऑफ अमेरिका में गए, I have a deposit in Bank of America. का कुछ डिपॉजिट है, पैसा है बैंक में, And I say, Bank of America is mine. तो वो समझते, वो कहते हैं कि ये बैंक जो है मेरा है। And they say, Swami, Bank of America is not yours. तो वो कहेंगे स्वामी जी ये आपका नहीं है। All right, I renounce it.
तो फिर वो कहेंगे ओके मैं उसको क्या What is the meaning of my witness? तो उसका Never क्या mind in the first place. आपका तो था ही नहीं तो क्या क्या त्याग किया I think I'm Indian. तो मैं सोच रहा हूँ मैं कि मैं भारतीय हूँ Where will I be in my next birth? अगले जन्म में कहाँ होंगे Russians are fighting the Americans. तो रशिया जो है अमेरिका से युद्ध कर रहा है Americans are fighting everybody. अमेरिका जो है सभी से युद्ध कर रहा है But in my next life, the Russian may be born as American, the American may be born as a Russian. तो अगले जीवन में रशियन जो है वो अमेरिकन के रूप में आ सकता है और अमेरिकन जो है वो रशिया में पैदा हो सकता है So what does it mean? I'm Russian, I'm American. It doesn't mean anything. तो इसका क्या मतलब है कि रशियन है अमेरिकन उसका कोई मायने नहीं It's a dream only. ये केवल स्वप्न है I can dream that I'm a king. कि मैं ये सपना देख सकता हूँ कि मैं राजा हूँ When I was a young temple president, तो जब महाराज युवक टेंपल प्रेसिडेंट थे I mean, those days in America, we really had no money. तो उस समय ना बहुत पहले 70s में तो ऐसा नहीं था So we had so many bills to pay. Janmashtami was coming. We had a big feast, and we had no money. जन्माष्टमी का समय था फीस बनाना था और उस समय पैसा बिल्कुल ही नहीं And I went to sleep that night. तो उस रात महाराज गए सोने के लिए I dreamed that I pulled into a convenience store, 7-Eleven, something like to get some. तो ऐसे महाराज सपना देख रहे थे कि जैसे किसी दुकान में सुपरमार्केट टाइप के दुकान में हो गए I was getting some water, some juice, something like तो that. कुछ जूस या पानी खरीद रहे थे महाराज And in my dream, I saw a lottery ticket on the ground. तो सपने में उनको एक लॉटरी का टिकट दिखाई दिया And I thought, well, we don't gamble. तो महाराज हम तो जुआ नहीं खेलते And then I thought, well, I didn't buy it. पर I महाराज found it. महाराज सपने So I'm में not gambling. सपने में महाराज ने सोचा कि मैंने तो खरीदा नहीं पर मुझे मिल गया तो मैं तो जुआ नहीं खेल रहा हूँ So in my dream, I won the lottery. I won millions of dollars. तो सपने में महाराज को लॉटरी मिल गया और उनको कई मिलियन करोड़ों डॉलर्स मिला I built a temple. I sent money to Mayapur. I sent money to DT. तो वो उन्होंने मंदिर का निर्माण किया मायापुर को ना पैसा भेजा और बीबी ने भी पैसा उन्होंने डाला And I have to tell you, I was quite happy. और महाराज बहुत खुश थे करके सपने में And then I woke up फिर जग गए महाराज and I was poor as a church mouse. और वो गरीब थे और कुछ एक पैसा भी नहीं था उनके पास It was all a dream. सब एक सपना था But in the same way, we're dreaming, but we think it's real. तो ऐसे ही इसी प्रकार हम सपना देख रहे हैं और सोच रहे ये सत्य है So, what to do? तो क्या करें हम Does it mean it's all that's a dream? It's all false? तो क्या ये समझे हम कि ये सब सपना है तो ये सब मिथ्या है झूठा है Prabhupada gives a great example. तो प्रभुपाद बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं And it's what this verse is talking about. और ये श्लोक इसी के बारे में बोल रहे हैं Suppose I'm walking behind someone. They're walking in front of me. We're walking. तो मान लीजिए मैं किसी के पीछे चल रहा हूँ And I notice the man's wallet falls out of his तो pocket. मैंने देखा कि उनका जो बटुआ है वो गिर गया He doesn't know that it's fallen. He keeps walking. तो उनको पता नहीं है वो चलते जा रहे हैं Now I can do several things. तो कई चीज कर सकते हैं हम I can look both ways. तो दोनों तरफ देखते हैं Nobody's watching. कोई देख नहीं रहे हैं Pick up the wallet. Put my wallet. और जो बटुआ है उसको लेकर अपने अपने जेब में डालना Of course, the idea that no one's watching is a big miscalculation. ये सोचने कि कोई नहीं देख रहा है ये बहुत बड़ी गलतफहमी है Prabhupada says Krishna has two eyes. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के दो आंखें होती है You got the sun and the moon. सूर्य और चंद्र होते हैं Daytime, nighttime. दिन में और रात में Yeah. And someone may say, what about a moonless night? कोई कह सकता है अगर अमावस्या है तो He's got all the Davids. तो कई देवी देवता है He's got 10 directions. तो 10 दिशाएं Don't होंगी worry, Krishna's got it covered. तो आप ना चिंता मत करो कृष्ण का कुछ बैकअप But in illusion, I can think no one's watching. तो माया में ये सोच सकता है कि कोई देखते हैं तो मैं But I'm always in anxiety. पर हमेशा ना डर में What if there was a CCTV camera? I missed. क्या पता सीसीटीवी कैमरा है तो मैंने देखा नहीं Someone knocks at the door. Maybe it's the police. वो घर गया मैं और कोई दरवाजा तो खटखटा रहा है क्या पता पुलिस है ये A thief is always in anxiety. तो जो चोर होता है वो हमेशा परेशान रहते हैं डर में रहते हैं So that's not the right thing. तो ये अच्छी चीज नहीं करनी चाहिए So you can think, I won't have anything to do with it. तो मैं सोचूं
सोचूंगा कि मुझे कुछ लेना देना नहीं इससे। If I bend over to pick it up, someone will think I'm stealing it. I'll ignore it. तो अगर मैं उसको ले लूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं चोरी कर लूंगा, तो उसको नजरअंदाज करूंगा। I'll have nothing to do with it. मुझे कुछ लेना देना नहीं इससे। This is like the yogis. They go off to the Himalayas. तो ये योगी के टोले में है जो हिमालय में जाते हैं। They pull all their senses in. They have nothing to do with this world. वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, अंदर डालते हैं और कुछ लेना नहीं देना हमारी दुनिया से। So one, the person who takes the money, sticks it in his pocket, he's a materialist. He's a bogey. He's trying to enjoy this world. तो जो व्यक्ति उस पकड़े को लेता है, लेकर जाता है, तो वो क्या है? वो कर्मी है, वो भोगी है इस दुनिया में रहता है। And the one who says, I'll have nothing to do with it. और जो कहते हैं कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है इससे। He's the tyagi, he's the renunciate. He's the, yeah, I know, it's all Maya, it's all illusion. वो त्यागी होते हैं, विरक्त होते हैं, वो योगी होते हैं। Now for 10 extra points, what's the right thing to do in this तो analogy? 10 मार्क के लिए क्या करना चाहिए हमको इस स्थिति में? Take the money and run? क्या पैसा लेकर भाग जाएं हम? Ignore it, have nothing to do with it? इसको नजरअंदाज कर ले, चले जाएं हम वहां से? What's the right thing to do? तो अच्छा और क्या करना चाहिए हमको? सही चीज Someone knows. कोई बताना चाहते हैं? Yes, sir. You return it to the owner. जो मालिक है उस चीज का उसको वापस कर लेना। The owner is very happy. Maybe he gives you some reward. तो जो मालिक है वो बहुत खुश हो जाएंगे, तो आपको कुछ रिवॉर्ड दे देंगे आपको। So everything belongs to Krishna. सब कुछ कृष्ण के हैं, It's not that it's illusion. इसे कहने की माया है। Prabhupada was peeling a tangerine. We say, oh, you orange, whatever you call it. तो एक बार प्रभुपाद जी जो है जो टैंजरीन ऑरेंज है उसको वो छिलका निकाल रहे थे। He was peeling it. छिलका निकाल रहे थे, He broke it into sections तो उसको काटे कई भागों में and he looked at it. और उन्होंने देखा, He said, how can they say there's no God? तो उन्होंने कहा वो लोग कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है? It comes so nicely packaged. इतना अच्छा पैकेज में आता है ये। We put everything in plastic. हम सब कुछ प्लास्टिक में डालते हैं। 10,000 years from now, our civilization will be gone. तो 10,000 साल बाद कि हमारा जो मनुष्य सभ्यता मनुष्य जो जाते हैं वो खत्म हो जाएगा And the plastic will still be there. और प्लास्टिक वहीं के वहीं रहेगा। But Krishna makes a nice wrapping और कृष्णा एक अच्छा पैकेज बनाते हैं and it's completely organic. और कंप्लीट ऑर्गेनिक है। The earth, it's fertilizer. तो वो डिग्रेड में चला जाता है। वो वृक्ष बन सकते हैं। वो You see all these car dealerships. तो ये जो कार के डीलर्स होते हैं, You have to get a big bank loan to be a car dealership तो आपके पास बहुत ही बड़ा लोन होना चाहिए अगर आपको कार डीलर बनना है। because you have to have a lot of variety of cars on your lot. तो क्योंकि आपके पास कई ना विभिन्न वैरायटी के गाड़ी होना चाहिए आपके पास। Forget that bank loan. तो बैंक लोन को भूल दीजिए आप। Just ask Mercedes-Benz ये मर्सिडीज बेंज तो गाड़ियों से पूछिए आप, to make a male Mercedes एक पुरुष मर्सिडीज बनाइए and a female Mercedes, और एक स्त्री मर्सिडीज बनाइए and you just put them in the garage and close the door, और गैराज में जाके दरवाजा बंद कर ले and you come back later and there's a baby Mercedes. और फिर समय के बाद आए तो एक छोटा सा बच्चा मर्सिडीज That's होगा a pretty वहाँ। good deal. तो ये बहुत अच्छा डील होगा Just breed Mercedes. You don't have to get a bank loan. कि मर्सिडीज का पालिए आप ना, तो बैंक लोन की जरूरत नहीं है। You know, we should stop for a minute and think about Krishna's mystic power. कुछ देर के लिए रुक के सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि भगवान की जो दिव्य शक्ति है उसके बारे में सोचिए। Sridhar Maharaj, the original commentator on the Bhagavatam, तो श्रीधर महाराज जो ओरिजिनल उन्होंने टिप्पणी दिया था भागवत के ऊपर, he says the first premise उनका जो पहला चीज है for understanding Bhagavatam अगर भागवत को समझना है तो is to accept the unlimited mystic power of Krishna. तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण के असीमित दिव्य शक्तियां। I don't have a exact thought accurate. So the point this is making in this verse तो ये जो बिंदु इस श्लोक में है जो is that the thing is not false. कि वो जो
जो चीज है वो असत्य नहीं है। How we use the thing is false. तो कैसे उसको हम प्रयोग करते हैं वो असत्य है। The value we ascribe to the thing is false. तो मूल्य जो देते हैं उस चीज को वो असत्य है। Just like the wallet is not false, जैसे वो बटुआ जो है वो असत्य नहीं था, but to steal it or to ignore it, that was a false conception. और उसको चोरी करना या उसको नजरअंदाज करना वो एक गलत धारणा था, असत्य था। So the process of bhakti is to cure that false perception. जो भक्ति का जो धारणा है ये है कि उस का प्रक्रिया है वो है कि उस गलत धारणा को सही करना। We take nice prasad. हम अच्छा प्रसाद पाते हैं। We don't say it's all Maya in the Himalayan cave on one chickpea a day. तो हम ये नहीं कहते कि प्रसाद नहीं पाएंगे, ये माया है, मैं हिमालय में जाके गुफा में जाके एक चना खाऊंगा मैं बस। Krishna says, what is it? Patram pushpam phalam tvayam yome bhakta priyachate. तो कृष्ण ये श्लोक बताते हैं। We take Krishna's things, तो कृष्ण की चीजें को लेते हैं, we make them nice for Krishna, कुछ अच्छा व्यंजन बनाते हैं उससे we offer them with devotion, और भक्ति से अर्पित करते हैं and we भगवान take को, it as Krishna's mercy. और कृष्ण के रूप के कृपा के रूप में हम उसको लेते हैं। Krishna eats with his eyes, कृष्ण अपने आंखों से खाते हैं, he eats with his ears, he hears the prayers, वो अपने कानों से भी खा सकते हैं, वो प्रार्थना को सुनते and हैं। it becomes one energy goes into this house. तो एक ऊर्जा आती है घर पे, It can go into the AC, वो एसी में जा सकते हैं ऊर्जा, it can go into the heater, the cooking, the stove, वो हीटर में या स्टोव में जा सकते it can go into the fridge. हैं, रेफ्रिजरेटर में। That one energy can be hot or cold. तो एक ऊर्जा गर्म या ठंडा हो सकता है। Krishna says, Janma dasa yataha. तो कृष्ण कहते हैं जन्माद्यस्य Everything यतः, comes from me. सब कुछ उनसे आता है। He says in Gita, Hamsavasha Prabhaho. गीता में भी कहते हैं अहम सर्वस्य Everything प्रभुः, comes from me. सब कुछ मेरे से आता है। So everything, whatever it is, we may call it matter, we may call it spirit. तो कुछ भी हो सकता है, हम उसको पदार्थ कह सकते हैं या आध्यात्मिक कह सकते हैं। Narada Muni says, नारद मुनि कहते हैं does not that thing, कि क्या वो it's not a चीज, thing, क्या एक ऐसी चीज है therapeutically treated, कि जब उसको ठीक करते हैं become the cure of the self-same disease. कि वो उस चीज की हल बन जाते हैं, उस बीमारी का हल बन जाते हैं। I'll explain. उसको एक्सप्लेन करेंगे। If we eat too many milk products, अगर ज्यादा दूध खाते हैं, दूध का पदार्थ खाते हैं, we get disturbance in the digestive system. तो जो हमारे डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। And the Ayurvedic cure is to eat yogurt. और उसका जो आयुर्वेदिक हल है कि हम दही खाएं। So milk caused the problem, तो दूध ने समस्या खड़ी की and yogurt cures it. और जो दही है उसको ठीक किया। But what is yogurt but milk transformed? तो दही क्या है? ये है कि दूध को परिवर्तित किया गया है। So the devotees, we see this world, तो भक्त जो है इस संसार को देखते हैं, but we know its right purpose. पर हम जानते हैं उसका सही लक्ष्य क्या है, उसका सही प्रयोग क्या है। We know how to use it. हम जानते हैं उसको उसका प्रयोग कैसे करना है। We don't put false values on it. उस पे गलत मूल्य नहीं डालते उसको। That's the illusion, the false value. ये भ्रम है, जो गलत मूल्य देते हैं उसको, ये भ्रम है। We have the right measure. हमारे पास सही माप है। What is it? Bhagavatam says, Samsiti Haritoshanam. भागवतम कहते हैं संसदि हरितोषणम। We know the perfection of everything is the measure of the perfection of everything is, does it please Hari? Does it please Krishna? तो हम जानते हैं अगर कोई चीज जो है कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। And therefore, only a bhakta is happy in this world. तो इसलिए केवल एक भक्त ही खुश रहते हैं संसार में। Everyone's trying to enjoy stolen things and please their senses, but it doesn't work. तो सभी यही प्रयास कर रहे हैं कि चोरी के सामान वो अपने तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं और तो ऐसे ही वो खुश नहीं है संसार में। Or they renounce everything. तो पर या सब कुछ त्याग कर देते हैं And they get no tushti, no happiness. और कोई संतुष्टि नहीं मिलती, कोई खुशी नहीं मिलती। And they become arrogant and their heart becomes like stone. अहंकारी बनते हैं और हृदय जो है पत्थर में परिवर्तित होता है। So, but a bhakta, we use Krishna's things in Krishna's service and we are happy in this world. तो भाग्य जो है वो कृष्ण की चीजें हैं, वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और वो खुश रहते हैं संसार में। I'll tell you one last prophet story, prophet Leela. I personally experienced तो this. एक
आखिरी जो प्रभुपाद की जो लीला है महाराज बताएंगे जो वो वही थे महाराज। We were sitting in Prabhupada's darshan room in Los Angeles. तो प्रभुपाद जी दर्शन दे रहे थे कक्ष में, तो महाराज जी भी बैठे थे वहाँ Maybe 15-20 devotees. लॉस एंजलिस में, तो 20-25 भक्त थे वहाँ And it was a cold day. और बहुत ठंड था उसमें। Everybody had caps, chadars, sweaters, and stuff. सब चादर पहने थे, जैकेट सब पहने थे। And right behind, like this, right behind Prabhupada, there was a big window. तो ऐसे प्रभुपाद जी के पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी, Window was here, खिड़की थी वहाँ, Prabhupada's here. प्रभुपाद जी आए We were all sitting here. और सब लोग सब भक्त ऐसे बैठे थे। And you know, sometimes the clouds will part and a ray of sun will come down. तो कभी-कभी क्या होता है, बादल यहाँ वहाँ चला जाता है और सूर्य का किरण आता है ऐसे, You know, a shaft of light, like a spotlight. जैसे स्पॉटलाइट होता है ना सूर्य से ऐसे आता है। So the clouds parted for a minute. तो जो बादल है वो बिखर गए, A shaft of light came right through that window. Sunlight. किरण का ना एक ऐसे आया, It looked just like a spotlight. स्पॉटलाइट के जैसे दिख It रहा was था। right. Prabhupada was right in a square of nice warm sunshine. तो प्रॉपर ऐसे स्क्वायर में किरण में थे, सूर्य की किरण रोशनी में थे, We were all in darkness, और सब जो बैठे थे वो अंधकार में थे, both figuratively and literally. और figurative और And Prabhupada caught the moment. और प्रॉपर समय उस क्षण को समझ लिया, पकड़ा उन्होंने। Prabhupada said, yes. प्रॉपर ने कहा हाँ, He said, someday you will feel this sunlight एक दिन ऐसे ही आप सूर्य के जो किरण है उसको आप महसूस करोगे, just like your lover's embrace. जैसे कोई प्रेमी आलिंगन करता है किसी और प्रेमी को। That is how a bhakta experiences this world. ये ऐसे ही एक भक्त इस तरह इस संसार का अनुभव करते हैं। I'm the pure taste of water. I'm the original fragrance of the earth. I'm the light of the sun and the moon. तो कृष्ण कहते हैं कि वो पानी का स्वाद है, वो रोशनी है सूर्य चंद्र के। So a devotee is happy. तो भक्त जो है खुश है, A devotee is fearless. वो अभय है, So that, because they know the right value, the right purpose for serving, how to use everything for Krishna's तो service. वो जानते हैं सही मूल्य क्या है, सही प्रयोग क्या है, हर एक चीज जो है तो संसार में कैसे कृष्ण के ये प्रयोग करना है। Our temple in Montreal तो मॉन्ट्रियल में कनाडा में एक मंदिर है, had been a bowling alley. तो वहाँ बॉलिंग करते थे वहाँ, We turned it into a temple. तो हमने उसको मंदिर बना। The temple in Boston जो मंदिर बॉस्टन में है, was a mortuary. तो वहाँ मुर्दे को रखते थे। You know, in America, they keep the body with all kinds of preservatives and they bury it in the ground. तो अमेरिका में क्या करते हैं, जो शरीर है, मृत शरीर है, उसमें कई पदार्थ डालते हैं और उसको डाल देते हैं। So this was a place where they do all that with, they take everything out, formaldehyde in and preserve the body. तो वो ऐसे जगह था जहाँ ये सब प्रक्रिया करते थे कि कुछ केमिकल डालते हैं बॉडी में ताकि वो प्रिजर्व रहे। It was full of ghosts. तो भूत से भरे थे वो, Nobody would buy it कोई खरीदना नहीं चाहते थे वहाँ। because everybody who bought the place moved in. It was full of ghosts. तो जो भी खरीदते थे जब जाते थे वहाँ तो वहाँ भूत थे। It was a great location right by Boston College. तो बहुत ही अच्छा जगह पे था, एक कॉलेज बॉस्टन कॉलेज के बगल में था। So great price, great location, तो अच्छा प्राइस था और अच्छा जगह था, but full of ghosts. पर भूत से भरा। They wrote Prabhupada what to do. तो प्रभुपाद से को लिखा कि हम क्या करें प्रभुपाद। Prabhupada said you have kirtan, प्रभुपाद ने कहा कीर्तन करो वहाँ, blow conch shells, आप शंख को बजाओ वहाँ, all the ghosts will go away. सारे भूत भाग जाएंगे। Bought the building at a great price, तो भक्त लोग ने उस बिल्डिंग को खरीदा बहुत अच्छे प्राइस had पे। big kirtan, the Lord Shringadev through the whole building. तो बहुत जोर से कीर्तन किया नरसिंहदेव का, All the ghosts left. सारे भूत चले गए We had a great temple. और हमको बढ़िया सा मंदिर मिल गया। So devotees know how to use things. तो भक्तों को पता है कि कैसे चीजों का प्रयोग करना है। So that's one way, that's one part of this verse. There's more packed in there, but और that's just बहुत कुछ है उस श्लोक में, तो ये एक भाग है श्लोक का, so we can end there. तो ये पे विराम देंगे। We'll take 2 questions. दो प्रश्न लेंगे, Everybody's got questions. Don't be shy. तो सबके पास प्रश्न होते हैं, आप शरण मत कीजिए। One from the ladies, one from the men. एक माताएं ने प्रश्न कह सकते हैं और दूसरे Now everybody's thinking someone next to me will ask the question. तो सब ये सोच So I don't have to.
जो मेरे बगल में है वो प्रश्न पूछेंगे तो मेरे को ना पूछने की जरूरत नहीं। But we need you to ask. और हम चाहते हैं कि आप भी प्रश्न पूछें। So we need someone to break the ice. We need a brave soul. तो कोई बहुत ही हिम्मत वाला चाहिए जो प्रश्न पूछेंगे अभी। Anyone have a question? पूछिए प्रश्न। I had somebody raise a question. Raise their hand one time. तो एक बार इसने हाथ खड़ा करके एक प्रश्न पूछा था। You know what the question was? आप जानते हैं प्रश्न क्या है? When's Prashad? प्रसाद कब है? I could take a hint. I said, okay, no question. But you had a question. आज तो समझ आ गया कि प्रश्न ही है। Yes, sir. बताइए आप प्रश्न। Yes. हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति बनती है, कोई भी परिस्थिति या कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, तो क्या उसके पीछे भी कारण कृष्ण ही होते हैं या फिर वो हमारे कर्मों का या प्रारब्ध? Like he is asking, what any situation in our life is Krishna responsible or our karma is responsible? What do you think? आप क्या सोचते हो? Why should you blame Krishna? आप कृष्ण पे दोष क्यों डाल रहे हैं? Did Krishna make the choice? क्या कृष्ण ने ये चुनाव किया? Who made the choice? किसने चुनाव किया? Who made the choice? किसने चुनाव किया? You made the choice. आपने किया। And you make the choice, you're the captain of your fate. तो आपने चुनाव किया तो आप अपनी किस्मत का Krishna's कैप्टन हैं। neutral. कृष्णा वो उदासीन है। Because the thing is, I'm a sannyasi, trying to be तो sannyasi. महाराज कह रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं। But just for example's sake, और एक उदाहरण के लिए वो बोल रहे हैं। suppose some young lady is sitting here तो ये युवती यहाँ बैठी है and I have a gun to her head. और महाराज जो है बंदूक दिखा रहे हैं उनको And I said, tell everyone you love me. और महाराज कह रहे हैं उनसे कह दो सबसे कि Tell them तुम how प्यार wonderful करते हो। I am. आप कह दो कितना बढ़िया हूँ। Oh, Swami's great. तो वो कहेंगे तो स्वामी बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। As soon as the gun is गone, और जब गन को बंदूक को हटा zing, दिया she's out the door. तो तेजी से भाग के चली गई। She's there because of force. तो वो वहाँ है क्योंकि जबरदस्ती हो So रही है। Krishna doesn't force us. तो कृष्ण जबरदस्ती नहीं करते हैं। Krishna, because what is the meaning of love without free will? तो प्रेम का क्या अर्थ है अगर उसमें स्वतंत्रता ना हो? If you love someone, if I'm with you because if I'm serving you because if I don't, I'm going to burn forever in hell. तो अगर मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ क्योंकि आप बोझ हो, That's not love. तो ये प्रेम नहीं, That's fear. ये डर होता है। If I say, "Oh Father who art in heaven, give us this day our daily bread," तो अगर मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ओ परम पिता कि आज हमको रोटी दे दीजिए, okay, well you're praying to God, तो हाँ भगवान से That's प्रार्थना good. कर रहे हैं, ये अच्छा है, but it's not really love of God. पर ये प्रेम भगवान प्रेम नहीं होता है, It's love of bread. ये रोटी का प्रेम होता है। If why am I loving God? I want to get 7 virgins in heaven. तो भगवान से प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 7 कुमारी चाहिए। That's not love of स्वर्ग God. में, ये भगवान प्रेम नहीं है। And not to just pick on them. ये ऐसे नहीं कि वो उनके दोस्त थे। It rhymes in English. It may not rhyme. It doesn't rhyme in Hindi. तो इंग्लिश में राइम होते हैं पर हिंदी में Om Jaya Jagadish Hari. ओम जय जगदीश हरे। Give me a new car and a house by the sea. वो बढ़िया सा गाड़ी और एक बंगला दे दो। That's not love of God. तो ये भगवान प्रेम नहीं है। It's love of the sea and love of a new car. ये समुद्र गाड़ी ना मकान का प्रेम है। So we make the choice, we get the result. तो हम चुनाव करते हैं और हमको ही परिणाम मिलता है। Hey, what is this? Mataji. Off, but ऑफ कर दीजिए आप, please. बंद कर दीजिए। धन्यवाद। That's a new person. That's her talk. That's a so love, Krishna gives us free will. कृष्ण हमको स्वतंत्रता देते हैं, And he gives us the result. उसका परिणाम भी देते हैं। At the same time, what is it? No, Sarvashachaham Hridistane Disto Matasmiti Jnanam Aponam Cha. सर्वस्य चाहर जिसने इसको मतलब स्मृति ज्ञानम अपना। ये Krishna's कहते in हैं everyone's heart. कृष्ण हर किसी के हृदय में है, He's giving intelligence. वो बुद्धि दे रहे हैं हमको, He's always encouraging us. वो हमको हमेशा प्रोत्साहित कर रहे हैं। You know, you get that little voice in your head. Yeah, you don't really want to do तो that. कभी-कभी ये आवाज आती है दिमाग में, कहते कि Yes, I do. ये नहीं करना है। Yes, I do. और हम सोचे Prabhupada gives the example that his youngest son was very naughty, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उनके जो सबसे always छोटा getting into trouble. चौथे बेटे हैं वो बहुत ही शरारती थे और हमेशा
कुछ न कुछ कर रहे हैं। And he wanted to touch a fan. He wanted to touch the तो fan. एक बार You know, वो a turning fan. जो फैन जो चल रहे थे तो उसको छूना चाहते थे। You got a steel fan spinning like that. You put your little finger in there, it'll cut तो your finger right off. लोहे का जो फैन होता है, पंखा होता है, अगर आप उसको छूओगे जब चल तो So आपको it's उंगली कट जाएगी। dangerous. वो खतरनाक होता है, But he wanted to do it. पर वो करना ही चाहते थे। So Prabhupada unplugged the तो fan प्रभुपाद ने उस फैन को ऑफ किया and he let it slow down. और जब वो धीमे गति में चल रहे थे, It was turning, but not enough to do any harm. चल रहे थे पर वो उतना खतरनाक नहीं था वो। And the boy went to touch the fan. तो बच्चा जो है वो गया उस पंखे को छुआ It scared him. और वो डर गए, He never touched it again. इसे उसको छुआ नहीं। So Krishna protects us. He tries to help us. तो कृष्ण हमारी सुरक्षा करते हैं, वो प्रयास करते हैं But हमें we मदद are करने के लिए, stubborn. पर हम ढीठ हैं। We want to try to enjoy this body. हम बस इस शरीर के प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते And हैं। even more importantly, और सबसे more significantly, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, we want to be at the center. हम केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं। We want honor. We want prestige. We want fame. सम्मान चाहते हैं, विख्यात होना चाहते हैं। We chant Hare Krishna, Krishna's name. हम कृष्ण का नाम जप करते हैं और क्या करते हैं? We fall asleep. हराते मारते हैं, सो जाते हैं। But somebody talks about us. और कोई हमारे बारे में बात करते हैं, Bhakti Gopal, he's so smart, he's so intelligent, he's so handsome. Oh, we're wide awake. और कोई कहता है भक्त गोपाल बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है, और वो जग जाते हैं। Let me hear more of these तो glories. और सुनो मैं ये गुणगान के बारे में और ज्यादा सुनो। So Krishna gives us free will, तो कृष्ण हमको स्वतंत्रता देते and we हैं। experience the wheel of samsara. तो हम संसार का जो संसार का Again, चक्र है, we could go on and on, but we won't. We उसका could go, अनुभव and ultimately become Tamakinchita Gocha, frustrated with all this तो stuff. अल्टीमेटली आखिर में हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं इन सब चीजों से। So Krishna gives us, we make the choice, Krishna gives us the result. तो हम चुनाव करते हैं और कृष्ण हमको परिणाम देते हैं। Simultaneously, he's just waiting for us to turn to him. और साथ ही साथ में वो इंतजार कर रहे हैं कि हम कब वापस आएंगे उनकी तरफ। So don't blame Krishna. तो कृष्ण को दोष मत दीजिए। And for a devotee, he even minimizes. और भक्त वो कर्म को कम कर लेते हैं Instead of getting our hand cut off, we hit our thumb with a hammer. कि मान लीजिए कि हमें हाथ को कटना था, और क्या होता है, केवल डोरी से हमें उंगलियां को इसको छोड़ देते हैं। We are the captain of our fate. तो हम अपने किस्मत के कैप्टन होते हैं। Nice question. बहुत अच्छा प्रश्न। Okay, one more question, we're done. एक और प्रश्न आता है, We've already answered when's prashadam, so yeah, हमने another question. कह दिया कि प्रसाद कब है, तो कोई और प्रश्न आता है? Yes, I knew you had a question. I can tell. You have to keep, you want to see. माता जी ये पूछ रहे थे कि आरंभ में जब हम आते हैं कृष्ण भागवत भक्ति में, तो बहुत उत्साहित होते हैं, जब करते हैं, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं, पर जितना भी ना समय गुजरता है तो वो उत्साह कम हो जाता है, तो वो उत्साह क्यों कम होता है और उसको कैसे? There's many ways to answer this. तो कई प्रकार से हम तरीके से हम But the स्पर्श कर सकते bottom line is, हैं। तो ये है we have to keep good association. तो हमको अच्छा संग रखना है, You have to keep good अच्छा association. संग में रहना है हमको। The thing is that this material, that there's a law of friction. Everything's rubbing against itself, you know, running against, and everything, inertia is slowed by the law of friction. तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता है, जहाँ ना सब जो वस्तु होता है एक दूसरे से रगड़ते हैं, और इनर्शिया होता है जो फ्रिक्शन को कम करते हैं। So we're going through this world, तो इस संसार में जा रहे हैं, and we're rubbing against the mode of ignorance, we're rubbing against the mode of passion, even sometimes we're rubbing against the mode of goodness. तो तीन गुणों से हम रगड़ रहे हैं जब जा रहे हैं, And it wears away at our enthusiasm. और हमारा जो उत्साह है वो कम हो जाता है उसके This कारण। material world is a dense place. तो ये जो भौतिक संसार है बहुत गहरा जगह है। We are surrounded by things that do not reinforce, but rather drain our Krishna consciousness. तो ऐसे चीजों से घेरे हुए हम जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, पर हमको रोक देते हैं। I mean, every signboard, every you have the ringtones or some Bollywood.
तो रिंगटोन में भी उसमें बॉलीवुड साउंड होते हैं, गाने होते हैं। So the material side is being constantly reinforced. तो जो भौतिक भाग है वो ज्यादा और ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है And we're addicted to it. और हम उससे एडिक्टेड हैं। It's not that we're cured automatically. ये ऐसे नहीं कि एकदम से ना ठीक हो जाएंगे। All those seeds are still in the heart. ये सारे बीज हृदय में हैं। So we're in a dangerous position. तो हम बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं। It's not so easy. ना आसान नहीं है। We've been conditioned for lifetimes. तो कई जन्मों से हम बंद हैं। I've had people say, I said Hare Krishna, nothing happened to me. तो कुछ लोग महाराज ये कहते I हैं, didn't see anything. सुनते हैं कि ऐसे कहते हैं, मैंने हरे कृष्णा बोला तो मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। Well, if you're jaundiced, you taste sugar juice, you don't taste it. You think it So- tastes bitter. तो अगर आपको पीलिया हुआ है तो आप जो गन्ने का जूस है तो पीते हैं तो आपको कुछ ना महसूस नहीं होगा, मिठास वो नहीं होगा, स्वाद नहीं होगा। But drinking the sugar juice will cure the liver, will get rid of the jaundice, and then it'll taste sweet. तो गन्ने का जो रस है अगर आप पियोगे तो पीलिया ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे आपको वो मिठास आ जाएगा। But in the interim, you have to keep good association. पर अंत में आपको सही संग में रहना है। That will encourage you. वो ये आपको We have to कोशिश stay करेगा। in sadhu sangha. आपको साधु संग में Because you रहना see है। other devotees, they're advancing, they're enjoying. तो आप देख सकते हैं बाकी जो भक्त है वो प्रगति कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं। Maldaji Devi told me, मालती माता जी ने महाराज का Prabhupada was leading a Pungal program in South India. तो दक्षिण भारत में प्रभुपाद जी का एक पंडाल प्रोग्राम था। And a man grabbed Prabhupada's feet. He actually held on to Prabhupada's foot. He So- couldn't walk. एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी के चरण कमल को पकड़ लिया और प्रभुपाद चल नहीं पा रहे। And the man said, save me, Swami, So- save me. तो व्यक्ति ने कहा बचाओ बचाओ स्वामी मुझे बचाओ। Prabhupada said, I can save you, प्रभुपाद ने कहा मैं आपको बचा सकता हूँ, but you must do the work. तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। If you fall into a well, Yeah. अगर आप एक well में कुएं में गिर गए आप you can't get out on your own strength. तो आप अपने शक्ति से बाहर नहीं जा सकते। What has to happen? क्या होना चाहिए? What is that? One should put the effort to keep the rope. Someone has to put a rope in. तो किसी को Or a रस्सी ladder. को सीखना पड़ेगा या सीढ़ी। That's necessary. ये जरूरत है। Is it sufficient? और क्या ये काफी है? What else has to happen? क्या होना चाहिए? Yes, true. You got to grab onto it. वो You जो got to climb out. व्यक्ति जो है उसको पकड़ना पड़ेगा। You can go to it. You can go to it. I'm sorry. I forget. You can go to an expert doctor. आप एक दक्ष डॉक्टर के पास He गए, can give you great medicine. वो बहुत बढ़िया दवाई दे सकता है आपको, What do you have to do? पर आपको क्या करना है? You have to take it. दवाई को लेना है। So we have to accept that it takes some time. We're jaundiced, तो we're हमको diseased. स्वीकार ये करना चाहिए कि कुछ समय लगेगा क्योंकि हमको पीलिया हुआ है, बीमारी है हमको। Our heart and mind is full of lifetimes of conditioning. तो हमें जो मन है हमारे हृदय है भरा हुआ है कई चीजों से। We're swimming against the current of Kali Yuga. हम Everything's flowing this way, and we're trying to go this way. सब कुछ इस दिशा में जा रहा है पर हम उल्टे दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। We have to fight. हमको लड़ना पड़ेगा। Krishna says to Arjuna, armed with yoga, stand and fight. तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि योग के माध्यम से So we खड़े have, होके युद्ध करो। we have to keep good association. तो हमको अच्छा संग रखना है। But I can guarantee you, और महाराज गारंटी देते हैं you stay with it, तो आप टिके रहो। and it becomes easier and sweeter and sweeter. वो ज़्यादा सुगम guarantee. ज़्यादा मीठा हो जाएगा। And you'll come to the point that you think, how could I ever do anything? It's not Krishna. तो उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि आप सोचोगे मैं कैसे ऐसे I wanna be- कार्य करूं जो I- कृष्णमय ना हो। I want to be with the devotees. मैं भक्तों के संग में I रहना want चाहता हूं। to serve Krishna. मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। There's nothing sweeter than the taste of bhakti. कि भक्ति के अलावा और कुछ मीठा चीज इससे ज्यादा मीठा नहीं है। And you serve Krishna, you'll do amazing things. तो अगर आप कृष्ण की सेवा करोगे तो बहुत ही अच्छी चीज करेंगे। The Pandavas should not have won the battlefield of Kurukshetra. पांडव को जीतना नहीं चाहिए था वो युद्ध महाभारत के। Prahlad Maharaj should never have been able to conquer Hiranyakasipu. तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करना था। Dhruva Maharaj should have been devoured in the forest. ध्रुव महाराज को कोई जानवर खा लेना चाहिए था। Draupadi was all alone in the arena.
तो और द्रौपदी पूरी सभा में अकेली थी। We could go on and on and on and on. ऐसे ऐसे हो सकता है कि उदाहरण दे Krishna सकते हैं। gives special care of his और devotees. कृष्णा का खास ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। And that relationship is very, very sweet. और ये जो रिश्ता है बहुत ज्यादा That's अच्छा the हो taste of जाता है। bhakti. ये भक्ति का स्वाद है। You think I'm nuts? I'm gonna settle. What does Rukmini say? Because I'll just say because I started. तो रुक्मिणी ये कहती है I'm gonna love Krishna, मैं कृष्ण से प्रेम करूंगी or I'm gonna set a bag of unmentionable things decorated with a mustache. या ऐसे ना जो बहुत ही तुच्छ पदार्थ से बना हुआ व्यक्ति जिसके पास मूंछ है उसके साथ जाऊंगी। मैं तो कृष्ण की सेवा करना चाहती हूँ। Of course, you can marry a nice devotee, serve a devotee. That's another thing. कि आप एक अच्छे भक्त के साथ शादी कर सकते हो और भगवान की सेवा कर सकते हो। So we can end there. यही पे विराम देंगे। Tell these gentlemen their timing is perfect. आपका टाइमिंग सही है, सही टाइम पे आए आप। The katha is finished, कथा खत्म हो गई and it's time for prashadam. अब प्रसाद का टाइम हो गया। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you. Guys, they guaranteed brahmacharya next life. तो धन्यवाद देंगे महाराज को और पंचतुलसी को भी तो आए यहाँ पर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज की पंचप्रभु जी की शुभवाद की धन्यवाद। Yes.